जिसको अपने बोलते हैं ना वेश्यावृत्ति, उसकी सर्वाइवर है, अपने बोलते हैं ना सब लोग सर्वाइवर हैं, उनका भी 15 साल की उम्र में उनको किसी आदमी ने खरीदा था, बेचा था, और वो अब जो है दुनिया में अपना जो आंदोलन है उसके लीडर बन गए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है अपनी जीवन कहानी की, अपनी आत्मकथा, उसका नाम है पेड फॉर, और वो किताब जो है दुनिया में बहुत विख्यात है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जो है जिमी कार्टर बोलता है उनकी किताब बहुत अच्छी है। और हमारा जो कल से लिटरेचर का फेस्टिवल शुरू हो रहा है वहाँ भी ये भाषण देंगी, तो ये पूरी दुनिया में जाती है, लोगों से मिलती, उनको समझाती हैं कि वेश्यावृत्ति जो है वो औरत नहीं चाहती, उसको बहुत खराब लगता है। तो वो आज तुम लोग के साथ भी एक गोल में बैठ के इसी के बारे में बात करने आए हैं। I just told them that you're Ruchira Moran and you're a survivor of prostitution, you're from Ireland and you broke the silence and you have written a book called Paid For, which is now helping us in our struggle all over the world, and you're a spokesperson for all survivors across the world now, and that is why you've come here to Kolkata to sit in a circle with us and talk to us. And वो अपने आप की बहुत अच्छी supporter है, and you're a big supporter of अपने आप. Yes. Well, first of all, I suppose I'll give you my own story very briefly. I left home when I was in my early teens because we'd had a horrible family tragedy. My father had killed himself, and my mother, who was very mentally unwell, she didn't react well to this, understandably, but she projected her grief in a way that was very abusive. तो सबसे पहले बता रही हैं कि वो कैसे प्रोस्टिट्यूशन में घुसी। तो उनके पिताजी जो थे उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली, आत्महत्या कर ली, और उनकी माँ जो थी वो बहुत दुखी हो गई और वो अपने गुस्से को निकाली। उनका दुख जो था वो समझ नहीं पाई कि अपना दुख कैसे किसी के सामने रखें, तो वो दुख जो था वो इनको पीट पीट के अपना दुख निकाल रही थी, गुस्सा के थ्रू अपना दुख निकालती थी। So that then led to the situation where I was homeless out on the streets at 14 years of age, and very quickly thereafter I met a young man and I was in prostitution. By the following year I was 15 at the time. और जब वो 14 साल की ही थी तभी वो घर से उनको उनकी माँ ने निकाल लिया था, तो वो बेघर थी और रास्ते में इधर से उधर भटकती थी। तो तभी उनको एक आदमी मिला और 15 साल की उम्र तक उसको उसने प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया था। So that went on for 7 years. I was 22 when I got out of prostitution, and by the time I did get out, I was heavily addicted to cocaine. और जब तक फिर 2 साल तक उनको प्रोस्टिट्यूशन में वो रही, और जब तक वो प्रोस्टिट्यूशन से निकली तब तक तुम लोग को पता है ना ड्रग्स अलग अलग होता है। तो अमेरिका में एक ड्रग है जिसका नाम है कोकेन, तो वो अमेरिका नहीं यहाँ भी पर इनको कोकेन का नाम नहीं पता होगा, इन लोग का ड्रग्स अलग है, टीवी में सुने हो ना। तो वहाँ पर फिर ये कोकेन की उनको अभ्यास हो गया और उसकी अडिक्ट कर गए। जैसे लोग शराब की होती है उनको पता है पुड़िया डालते हैं अलग अलग तरह का। So anyway, as I told the young girls here earlier on today, I left prostitution. I was very lucky to be able to get out of prostitution when I was 22, and about 2 years after that, I spent 2 years just reeling from it, just feeling very depressed and trying to figure out how to maybe manage my life and where to go from here. And at that point, I went back to education. तो फिर जब वो निकली तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, अपने जीवन को कैसे संभालें। तो तब वो पढ़ना शुरू की, तब वो सोची कि बैठ के किसी तरह कि अब मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिक्षा करना पड़ेगा, तो वो शिक्षा पढ़ाई की तरह करी। But there was always something in me that knew I always knew I had to write about what had happened to me, because it was something that the wrongfulness of it, the hidden injustice of it was absolutely tearing me apart. Injustice is one thing, but this hidden injustice, that was the part that I couldn't move on without talking about that. बोली कि जब वो कैसे संभाले अपने जीवन को, और उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ वो था कि जो
जो गलत हो रहा था उनके साथ, गलत मतलब गलत उस तरीके से कि शोषण था, गुलामी थी, और हम लोग बोलते हैं ना न्याय होना चाहिए किसी के साथ, पर इनके साथ न्याय नहीं हो रहा था। जो अन्याय हो रहा था वो उनको खराब लग रहा था। उनको जो खराब, अपने बोलते हैं ना ये गलत काम है। गलत का मतलब क्या होता है? अन्याय। जो भी काम में अन्याय होता है वो काम गलत होता है, इसलिए हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग सेक्स के खिलाफ नहीं होते, हम लोग बोलते हैं अन्याय जो है वो खिलाफ है, वो गलत है। तो वो बोली कि उनको जो ये छिपा हुआ अन्याय था जो इनके जीवन में था, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था, तो ये उनको सबसे खराब लगा था। So I knew that I was going to have to write this book, and so I did. And because I didn't write it, I didn't sit down every single evening to write. I came and went from it. It took a full 10 years to write. और फिर उनको लगा कि नहीं, मैं मेरी किताब लिखती हूँ, क्योंकि अगर मैं किताब लिखूंगी तो लोगों को पता चलेगा कि इस जीवन में कितना अन्याय होता है। और क्योंकि वो इसमें इतनी अंदर थी तो लिखने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, उनको 10 साल लगा अपनी कहानी लिखने में। So eventually it was published in Ireland in April of 2013. It was very successful. It was a bestseller there, and it's moved now to several countries throughout the world and several different languages. और फिर वो किताब जो है आज बहुत बिक्री हो रही है। आयरलैंड में छपी, पर वहाँ से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में छपती जा रही है, बिकॉज इतने लोग पढ़ रहे हैं उस किताब को। It would be great to have an Indian version. I'll let you know if that happens. अब बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा होगा अगर ये किताब हिंदी में भी छपे, और अगर होगी तो तुम लोग को ज़रूर बताएगी अगर हिंदी में छपेगी तो। So another big piece of what I've done in recent years is to form a group that works across 7 different nations, trying to press for legislative change at government level. और अब उन्होंने क्या किया है कि प्लीज, और अब उन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने ग्रुप बनाया है जो 7 देशों में काम कर रहा है, और वो ग्रुप जो है कोशिश कर रहा है कि कानून को बदलने के लिए, जिससे कि अन्याय नहीं हो। We've already been involved in the change of legislation in Northern Ireland, which holds people who pay for sex criminally liable now. और नॉर्दर्न आयरलैंड में जहाँ से वो हैं, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर एक बिल होता है जो पार्लियामेंट में जाता है जिससे कानून बनता है, तो वहाँ पर वो बिल तैयार करके भेज दिया है पार्लियामेंट में, जहाँ पर अगर वो कानून बन जाएगा तो जो लोग ग्राहक हैं और जो दलाल लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, औरतें नहीं पकड़ी जाएगी। So, thank you. And we have the Republic of Ireland, which is where I'm living, that's ready to go with the same legislation in the next couple of weeks, and also France. So we have this law on the move, and it's already in several of the Scandinavian countries. So I do think that together as a global movement, we will get this law everywhere in the end. I think it'll become the new norm at some future time. Absolutely. और अब ये जो कानून है, ये दूसरा देश है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वहाँ पर भी ये कानून कोशिश कर रहे हैं लोग मूव करवाने का। फ्रांस में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तुमको पता है डेमियन दा आए थे ना यहाँ पर, तुम लोग के लिए गाना गाए थे, तो हम लोग फ्रांस में भी कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग को लगता है कि हम लोग हर देश में ऐसा ही कानून बना देंगे जहाँ औरत या लड़की को सजा नहीं हो, पर ग्राहक और दलाल को सजा हो, और यही नॉर्मल हो जाएगा फिर। So, have we had I'd be interested in talking to the young girls. हाँ, अब तुम लोग अपने बारे में बताओ, अपना नाम और तुम लोग की छोटी छोटी कहानियाँ, जिसको भी बोलना हो। कौन शुरू करेगा? उमा शुरू कर फिर। उमा बोल चुकी है। She's already talking. और किसी को कुछ बोलना है? फिल्म वशीकन तली तुम बोल सकती है ना, because she saw your film. तेरा फिल्म देखा है, कैसे बनाया, कुछ भी बोलना हो तो बोल सकती है। कुछ भी सवाल भी करना हो तो अपना नाम बताओ और सवाल। फर्स्ट प्राइज। My name is Dolly and मैं यहाँ अपने आप में 8 साल की उम्र से आ रही हूँ, और मैंने ये फिल्म बनाया क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, और मैं रोज़ वो प्रॉब्लम फेस करती हूँ आते जाते रास्ते में, तो मैं उस प्रॉब्लम्स को फिल्म के ज़रिए सबके पास पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाया।
My name is Dolly and I've been coming to the Apne Aap Center since I was 8 years old, and I recently made a movie to highlight the problems in my areas because there are many problems, and every day as I walk in the streets over there I face many problems. And I'm a star. She just won the first prize for the movie that she made. Did you? That's great. That's great. Really enjoyed it. And I've learned from her. And do you want to ask Rachel anything? तुमको Rachel से कोई सवाल है? तुमको है कुछ सवाल? ये सवाल है प्रियंका? और किसी? मतलब हम पूछना चाहते हैं कि मतलब कि जब आपके साथ ऐसा हुआ, जब आपकी मम्मी पापा आपको मतलब आप जब बेघर हो गई थी तो आप पढ़ाई कैसे स्टार्ट की? मतलब कि आपको क्या लगा कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए और वो मनी कहाँ से आएगा? आप कोई संस्था से नहीं जुड़ी कि ऐसे खुद से मतलब कैसे वो हुआ? She says that when you became homeless and you decided I'm going to study, so how were you able to do it? Where did you find the money to study? Were you associated with any organization, or how were you able to start studying? Tara, I'm very lucky to live in a country where third level education fees are free. The government considers that they made a new law in 1995 where they considered that everybody has a right to a third level education, a university education, no matter what part of society they come from. It's a great thing in theory. It doesn't always work in practice, but it allowed me. I got a grant, an adult return into education grant that allowed me to go to education and get my life on track. तो वो उनके देश में जो है शिक्षा जो है एकदम फ्री है, कॉलेज की भी, तो इसलिए वो लकी थी कि ऐसे देश में जन्मी थी और ऐसे देश में रह रही थी, तो इसलिए वो कर सके. I see women in countries like the United States and other countries that, other survivor activists I work with, who haven't had the good fortune to have my opportunities because the educational system is so very expensive where they come from. So I'm very aware how lucky I am in that. वो बोल रही कि उनको पता है कि वो कितनी लकी है क्योंकि वो अपनी बहनों से मिली हैं और देशों में जैसे अमेरिका, जहाँ पर एजुकेशन बहुत महंगा है और वहाँ पर उन लोग पढ़ नहीं पाती हैं, तो वो जानती है कि वो कितनी लकी है कि वो पढ़ सकें. और कोई सवाल? फोकस 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 नीचे नीचे या मतलब कि बताइए कि मतलब कि उनको वो जो आप बोले थे ना ड्रग्स कोकेन का जो लग गया था, उनको लग गया था, तो फिर कैसे इनसे बाहर आए फिर? How did you get out of cocaine addiction? Good question. Oh, the hard way. By the time I stopped taking cocaine, I'd been at it about 3.5, 4 years, and it was so, I completely corroded the entire inside of my nose. I developed a massive, what's the word I'm looking for? Like a cavity, yeah, in my septum. बोली कि कोकीन 3-4 साल तक ली तो उनके नाक के अंदर से, उन लोग स्निफ करते हैं ना, अंदर सूंघते हैं, तो नाक के अंदर कैविटी बन गया, मैंने एक बहुत बड़ा छेदा और सेप्टम जैसा हो गया था उनके नाक के अंदर, तो बहुत मुश्किल हुई थी. And when I was getting off it, I have a personal belief that the only way to get off any type of drug is to do cold turkey. I just don't see any other way, so that's what I did. बोल रहे हैं कि वो कोई भी चीज़ से अगर कोई भी नशा से निकलना हो तो ये है कि एकदम छोड़ दो, फिर उसके बारे में सोचो भी मत. तो उसी तरह उन्होंने एक दिन सोचा और दूसरे दिन से एकदम मैंने छुआ तक नहीं सोचा तक नहीं इसके बारे में. ऐसे हो गया. She said, how were you able to do that? You just put it down. बस नीचे रख दो. It's the only way, you know. और ऐसे शराब पीते हैं आप बोलते छोड़ने के लिए तो कोई छोड़ती नहीं. Drink alcohol, and she tells them to stop drinking, but they say we can't leave it. But you know, there's different levels of addiction. I still smoke cigarettes. I'm not an angel by any means, but I knew that the cocaine was killing me. You know. वो बोली कि सब तरह तरह के का नशा होता है और अभी भी ये सिगरेट पीती हैं
पर वो जानती थी कि कोकेन का नशा जो है उनकी जान को ले लेगा, इसलिए उनको छोड़ना, वो सोची कि छोड़ना ही चाहिए। और सिगरेट पीने से भी तो जान का खतरा है। Cigarette is also very bad Rachel, for she's you. taking your case. Yeah, true. She's taking your case. I promise I'll stop before I'm 40. No, I All have. nice, all nice. So it's my birthday on Valentine's Day. So I said I'll be 40. So I have like less than a month now. You look 30. Thank you so much. I don't know how I got away with it. तो वो 14 फरवरी को 40 साल की होने वाली है, तो तब वो सोची है कि सिगरेट नहीं छोड़ेगी। हाँ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे इसे बोलो। इसको देख बोलो। Sorry. वो 14 फरवरी को। No, she said. I said it once. I won't say it again. Fair enough. ओके ओके, और कोई था कुछ? अभी किनके साथ रहती है, मतलब अकेले रहती है और क्या करती है? Oops. Do you live alone or do you live with somebody? What do you do now? I have a son who's almost 22. She's So- asking about partners. Sorry. I've been single for 5.5 years. I've never been married. I've no desire really. Do you believe in marriage? Oh yeah, certainly as an Really? expression of love between two people. I do, yeah. But marriage? Well, it's right for other people, and plenty of them. I don't see it as being right for me. That's what I was asking. Yeah, it's the political history of marriage is something that That's true. I don't like to look at, and of course it's used in ways all over the world that are abusive, and That's right. so it's not the same thing though, I suppose. Do you want to talk more about this, Ruchi? For the kids? Yeah. About marriage? तो ये बोल रही हैं कि इनका एक 22 साल कॉफी ठीक है। ये 22 साल का बेटा है इनका, और उसके साथ रहती है, पर उनका कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो शादी में विश्वास नहीं करती हैं, और औरों के लिए ठीक हो सकता है पर वो खुद नहीं मानती कि उनके लिए शादी है। अगर दो लोग सच्ची में प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी करना चाहते हो तो उन लोग करें, पर एक औरत होने के जरिए जो इतिहास है शादी का वो उनको नहीं सूट करता है। वो बोलते हैं कि शादी का इतिहास में औरत बनती है। हाँ, शादी करना वैसे भी जरूरी नहीं है। So she says yes, there's no necessity to get married. No, I don't feel any necessity to get married. I mean, marriage is only worthwhile if it's a two-way street. If it's what's the word I'm looking for? Equality? Yeah, I'm really tired, by the way. I'm only just off the plane, so I'm not firing on all cylinders, Ruchira. I apologise. If it's consensual to an equal extent by both parties, welcome. Well, then marriage is great. If not, it's just a prison without bars. वो बोल रही है कि शादी अगर दो इंसानों के बीच में बराबरी का हो, जहाँ दोनों के बीच में बातचीत हो, डायलॉग हो, तब तो ठीक है। नहीं तो एक जेल ही है जिसमें खाली वो नहीं है, जेल के बार्स, रॉड्स नहीं है। नहीं शादी नहीं करती हूँ, शादी में विश्वास नहीं करती। तुम वैलेंटाइन डे भी बरसी हुई हो। They're assuming you're married. They're assuming. Oh, They yeah. think- yeah, she didn't register. There were all the women who were in prostitution with you, have they all left cocaine? They weren't all on cocaine. Most of them were on heroin. Oof. और औरतें जो थी वो एक और ड्रग है जिसका नाम है हेरोइन, तो उस पे थी कोकेन की हीरोइन। मैं इन्हें वो दिया गया था नशा, ये खुद से ट्राई की थी। Did you try it yourself or did someone give you cocaine? Well, someone offered it to me and I took it. I was 15 the first time I did cocaine, but I was 18 before I got addicted to it. बोली कि पहली बार किसी ने इनको ऑफर किया और इन्होंने ले लिया। 15 साल की थी और 18 साल तक एडिक्टेड ना, उनको नशा का हैबिट हो गया। मैम, इनको साहस कैसे आया? Officer. इनको साहस कैसे आया जब घर से निकाल दिया गया? थोड़ा मन घबराहट होता है ना, तो ऐसे तो हुआ होगा ना, आखिर कैसे साहस आया इनको? Where did you find the courage
deal with all this? You were homeless, you were addicted to cocaine. Where did you find the courage? When I think back on the 18 months or so between the spring of 1990 and the summer of 91, I don't actually know how I got through that time, because it was so relentless and it was so it was just crazy. I probably slept in 100 different locations. I was just going from place to place to place, and I honestly don't think I'd have the kind of strength now for. I wouldn't have the energy, you know. I was बोल रही है कि 18 महीने तक उनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि वो कैसे जी उस समय 100 जगह रही, अलग अलग जगह, और रोज कुछ ना कुछ उनके साथ उनका उपयोग होता था, उनके साथ अन्याय होता था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, 18 महीने के अंदर 100 जगह रही। अब बोलिए अब शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो, उस समय जितनी हिम्मत। फिर वहाँ से वो बाहर कैसे आई? How did you get out of that? They can't understand that. No, not at all. I think the biggest piece of that for me was the fact that it was, I believe it was my son, because you see he was 4.5 at the time, and in Ireland children start school at 5 years old, and he was about to start school. I got out of prostitution in August of 1998, and he started school the following month. So as that time period was closing down, I knew that if I couldn't get my son to school every day, I was going to lose my son. And there's no way you can keep to any kind of a routine with a school-going child if you're a cocaine addict. तो बोली कि एक कारण था उनका बेटा था 5 साल का था, और उनको पता था कि 1 साल के अंदर उसको स्कूल में भेजना है, तो किसी तरह सोची कि नहीं, मैं अपने कोकीन नहीं लूँगी और नशा नहीं करूँगी जिससे कि मैं किसी तरह उसको स्कूल भेजूँ, क्योंकि अगर वो स्कूल जाने लग जाता है तो उसको एक निश्चित समय पे जाना है, निश्चित समय पे पिकअप करना है, छोड़ना है। तो कोकीन एडिक्ट अगर वो रहती तो फिर वो बच्चे को नहीं संभाल सकती, समय पे स्कूल भेजना, समय पे लाना, ये सब। तो इसलिए उन्होंने किसी भी तरह अपने बेटे के लिए छोड़ा। Stop for a second. Can we just put one more light on? It's become dark. Just one light. Sorry. वही जा रही Nothing. Okay, good. What does your son do now? He's in college. आपको कॉलेज एक बार फिर से पूछो. फिर से पूछ लो। Sorry. What does your son do now? He's doing like a computer graphics course. कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं कॉलेज में। और अभी क्या बोली 1998 में? What did you say about 1998? That was the year I got out of prostitution. 1998 के साल था जब वो prostitution से निकली। मैम, इनके ये पापा ये खुद से किए थे, तो उनकी मम्मी घर से इन्हें क्यों निकाल दी? मतलब क्योंकि उसके Why was your mother angry with you? Well, she After your dad killed herself. She has paranoid schizophrenia, so her behaviours wouldn't make sense all of the time, especially when she was very overwrought emotionally. क्योंकि उनको बहुत खराब लगा जब उनके पापा ने सुसाइड किया, और उनको एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। तो वो अपने दुख को संभाल नहीं पाई, और उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि दुख का ट्रांसफर उन्होंने गुस्से में कर दिया और इससे निकाल दिया। अभी अपनी मम्मी से मिली है, मतलब वहाँ से निकलने के बाद? Have you met your mother since then? When I was about 25, I visited her a few times, but besides that, no, we can't have a relationship because she's so unwell mentally that it's not possible. तो ये 25 साल की थी तब मिली 4-5 बार, क्योंकि माँ के साथ कोई बहुत बढ़िया रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि उनकी माँ इतनी बीमार है कि वो ठीक से सोच नहीं पाती है, तो इसलिए वो जो रिश्ता बन सकता है वो नहीं बन सकता। पर 4-5 बार मिली 25 साल की उम्र के बाद। So yeah, it doesn't mean I don't love her. It just means like she's not well enough to have a relationship, you know. इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी माँ को प्यार नहीं करती है, वो प्यार करती है। इसका मतलब ये कि उनकी माँ जो है बीमार है और वो इनके साथ रिश्ता नहीं बना सकती है। लेकिन अपने मम्मी को तो लाकर अपने पास रख सकते हैं, उनका देखभाल कर सकती है।
Can you keep your mother near you and look after her? Can you bring your mother to your home and look after her? I would, if I wanted to go to the bathhouse myself, yes, that would be a great idea. रिचर बोल रही है कि अगर वो खुद पागल खाना में जाना चाहेंगी तब वो अपनी माँ को अपना घर ला सकती हैं. They didn't understand what schizophrenia was. Oh, right. Maybe you should tell them. Schizophrenia, it's very difficult for me to explain what schizophrenia. I know it will be reduction, but still try. अच्छा, schizophrenia एक बीमारी होती है जिसमें एक तरह का पागलपन है जिसमें आदमी के अंदर बहुत सारे लोगों का उनको लगता है वो बहुत सारे लोग हैं. माने simply split personality. शायद पर्सनालिटी कैसे समझाओगे? मैं हूँ, मैं काली हूँ. हाँ, हम ये देखे हैं फिल्मों में. हाँ, पर्सनालिटी दिखाता है. वहाँ बताया गया. उसको खुद ही नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रहा है. क्या है? मैं कितना तक पढ़ी है? How much have you studied? Altogether, I did, let me see now, I did 5 years and then I went back and did another 2, so 7 years altogether. I could have been a doctor if I chose. अगर वो चाहती तो वो डॉक्टर भी बन सकती. You've been after school? Huh? After school? Yeah, I mean, yeah, as an adult. School and पढ़े. मैंने कॉलेज है 7 साल कॉलेज है और डॉक्टर होते पाते हैं किंतु डॉक्टर चूज कर लेना. आंटी जब इनका मतलब बुक हिंदी में आएगा ना तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे, इसलिए प्लीज हमको बताइए. They said that please do share your book when it comes out in Hindi. They would love to read it. Oh, I'd love to have it come out in Hindi. That would be great. Oh, well, I'll let Ruchira know immediately. I will help her to get the book out in Hindi. we are sisters. We are friends. You know how you become sisters? Sometimes you have a family of choice, birth. মানে তোমরা বোন কে আমি বলছি আমার বোন আছে কেন বিকজ দুটা ফ্যামিলি একটা ফ্যামিলি হয় ফ্যামিলি অফ বার্থ মানে আমার মা আছে আমার বাবা আছে যার পেট থেকে জন্মেছি হ্যাঁ আর একটা হয় ফ্যামিলি অফ চয়েস মানে যাকে তুমি চুজ করো দ্যাট এই আমার ফ্যামিলি তো আমাদের একটা ফ্যামিলি অফ চয়েস আছে আমাদের মুভমেন্ট সো এই জন্য আমরা বোন আছি. Yeah, we first met in New York, I think, wasn't it? Yes. New York, yeah. Did we meet in New York or Atlanta? I can't remember. No, it was New York. It was because New we York. met several times. So many times Yeah. in the last few years, actually. Recent. No, maybe we met first in Paris. Did we meet in New No. York? It No, was we New met York. in New York Yeah, at CSW. that's right. We met at CSW. We were on the same panel together. Mm. हम So- लोग सबसे पहले न्यूयॉर्क में मिले. हम लोग यूनाइटेड नेशंस विश्व राष्ट्र संघ है उसके एक पैनल में हम लोग दोनों बात कर रहे थे. But you know the panel we did recently in Norway, that was the first time that I heard your full story about how you got interested in dairy and how you found it Apne Aap. And I thought, oh my God, it's really impactful, that story. Have you ever written your life? Why not? I will. You know, the movement which gives me the material for the story also takes away the time to write the story. I know exactly what you mean. Yeah, it would be a real eye-opener, I think, for a lot of people, especially in the West. I would be happy to write it if you think it will be useful. Yeah, I do think so. If you say that, then. वो बोल रहे हैं कि मेरे से जब सबसे पहले मिली तो न्यूयॉर्क में हम लोग मिले थे, फिर उसके बाद अभी हम लोग नॉर्वे में साथ में थे और मैंने बताया कि मैं कैसे अपने आप मैंने कैसे शुरू किया अपना संगठन. तो बोली वो उनके ऊपर उनको प्रभाव किया और वो बोल रही कि तुमको भी अपनी कहानियाँ एक किताब में लिखनी चाहिए थी, तुमने अपने आप संगठन बताया. तो मैंने कहा मैं ज़रूर लिखूँगी अगर तुम कहती हो तो ज़रूर लिखूँगी. Last question. क्वेश्चन नहीं है, लास्ट है. हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन. हम बताना चाहते हैं कि रेड लाइट एरिया में जो भी महिला लोग आया है उन लोग उस धंधा पे जाने का बाद वो लोग का हिम्मत नहीं रहता है कि उन लोग उस दलदल से निकाल सके. हमको ये आंटी का बात सुन के लग रहा कि सच में महिला लोग का अंदर लड़की लोग का अंदर सच में माँ दुर्गा माँ काली का ही रूप है जो इतना हिम्मत से वो निकल के फिर वो पढ़ा लिखा करके एक अपना पैर में खड़ा हो गया. लेकिन हम लोग जिस एरिया में रहते हैं हम लोग बहुत सा ऐसा महिला से बात किए हैं
खुद का भी फैमिली का महिला से बात किए, वो लोग एक ही बात हम लोग को बोलते आया है कि हम लोग इस दलदल में आए हैं, हम लोग का जिंदगी खत्म हो गया है। लेकिन आज ये आंटी का बात सुन के हमको लगा कि उन लोग का जिंदगी खत्म नहीं हुआ, उन लोग चाहता है तो उन लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। So Uma has said something very important, which is our message to you from Apne. She says after listening to you today, she realizes that women in prostitution can actually get out. Where they live, where every woman who is in prostitution believes that it's not possible to get out, and they will be consumed and slowly just wither away and die there. But after listening to you, they have the hope that it's possible. She actually begins to believe it's possible. She's begun to believe that it's possible. You've given her hope. Tell her I won't speak too long in response because I'll start to cry. It's the one thing that I want to bring, and if you got that, I'm so happy. बोले वो ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी क्योंकि वो रोने लग जाएंगी, पर वो इसीलिए बाहर आके बात कर रही हैं, किताब लिख रही हैं कि अगर औरतों का फिर से आशा जग जाए और समझ जाए कि हम निकल सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसमें फंसा रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी बात। हम लोग चाहते हैं कि ये दीदी का कहानी उस महिला लोग का पास पहुँचे, उन लोग भी ये दीदी का जैसा हिम्मत करके रेड लाइट एरिया से निकल, ऐसा आंटी का जैसा सब महिला एक साथ होगा तो रेड लाइट एरिया बंद ही हो जाएगा। She says that she wants every woman in the red light area that she knows to hear your story, and if every woman in the red light area becomes like you, then the red light area will close down. Well, that is the goal, isn't it? No more red light areas. As soon as we get that would be fantastic. I'll tell you what. As soon as Ruchira finds me a Hindi publisher, I will come back here to Calcutta and I will go down to the red light district and I will give all of the women a free copy. That's that. बोलेंगे कि जैसे ही मुझे इनके लिए हिंदी पब्लिशर मिल जाएगा तो हम लोग हिंदी में किताब निकालेंगे और फिर ये कलकत्ता वापस आएंगी और रेड लाइट एरिया में जाएंगी और सबको हिंदी वाला किताब देंगी, तो इनकी कहानी से और लोग भी सीख सकते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा। Can you just take one wide angle shot? Sure, अभी 1 मिनट बैठ गए हैं ना, वो दूर से थोड़ा ऐसी बात करते हैं, जो भी बात कर रहे हैं। Do you want to ask them any questions? Oh, we did. Let me see. She's made a movie called Kali, and they are saying, oh, I forgot to translate that bit, where they said that you have, there's a mother in Calcutta is a place where the mother goddess is worshipped. We don't worship male gods here. So the mother goddess. There's a cult. There are 10 mother goddesses. Yeah. And so there's a goddess called Kali, and there's a goddess called Durga. So they say that the good mother is Durga, and the destructive mother is Kali. Okay. And so Kali and Durga are in you, they are saying. That you have the strength and the ability. So, They said that? yes, Uma said that. Sorry, that's very Well, important. She said that. Yeah. তুমি যে দুর্গা আর কালী জিনিস বললেন যে এর ভিতরে দেখছেন, আবার বলে দাও। हम ये आंटी का अंदर हम अब यकीन कर लिए हैं कि महिला लोग का ऊपर चाहे लड़की लोग का अंदर दुर्गा और माँ काली का भी रूप है, उन लोग सब मर्द लोग को पीट के खत्म कर देगा। सब नहीं, Meeting you, she actually found the Durga and within women themselves, not ये outside. बदमाश है। And they just beat up men. You are now debating all guys. Is he also bad? They're saying they're debating all Oh, now they're guys. saying, but all men are not bad. He's okay. Am I okay? मैं खुद के बारे में एक बात बताना She wants to चाहती tell हूँ। you something about herself. हम भी बहुत कम उम्र में शादी कर लिए हैं, फिर मेरा पति भी हमको बहुत सारा टॉर्चर किया है, इस तक कि वो चला गया था कि वो भी हमको ये धंधा में बेच देगा। She was also married very early. लेकिन her हम husband tortured her a lot and tried to sell her into prostitution. लेकिन हम बचपन से अपने आप में हैं, फिर मेरा माँ का सपोर्ट, मेरा अपने आप का सपोर्ट, मेरा अपने आप भी मेरा माँ बाप है, तो इन लोग ने मुझे बचाया, इन लोग हमको रहने का जगह दिया। मेरा 5 साल का बच्चा है,
She also has a 5-year-old son, and then Apne Aap supported her. Her mother supported her. They gave her a place to stay and saved her. Apne Aap, and so she has a 5-year-old son right now. Okay, well then you're in a similar place to where I was. She says, तुम ये जहाँ थी वहीं पे तुम हो अभी. तो मेरा हम भी हिम्मत तोड़ दिए थे कि मेरा शादी हो गया है, मेरा एक बच्चा हो गया, हम क्या करेंगे. लेकिन हमको छोटा से मेरा सपना था कि हम एक बहुत बड़ा डांस टीचर बनेंगे और हम बच्चा लोग को डांस सिखाएंगे. लेकिन अपने आप मेरा सपना मेरा साथ देके मेरा सपना को पूरा किया है. अभी हम डांस ट्रेनिंग लिए हैं, डांस मूवमेंट थेरेपी का टीचर बन गए हैं. तो मेरा बेटा मेरा पास नहीं है, मेरा पति मेरा बेटा को लेके गया है. अपने आप मुझे हेल्प कर रहा, मेरा केस फाइल किया है. अपने आप का सपोर्ट में हम केस लड़ सक रहे हैं. फजल दा, टिंकू आंटी, रुचिरा आंटी, हम अपने आप को सबको थैंक यू बोलेंगे कि उन लोग का मदद से मेरा बेटा को हम अपना पास ला सकेंगे. She says her dream was always to be a dance teacher, and now she's learned how to do dance movement therapy, and she is a dance teacher. But the other dream is that she gets custody of her son. Her husband has kept the son, and she's got a case going on against the husband. I'm also 20. Get back the son. Oh, that would be so. Tell her as a mother I feel for her. बोल रही कि एक माँ के नाते वो तुम्हारा दर्द समझ सकती है कितना मुश्किल होगा. So let's see now. I think that Indian women, I'll just wrap it up with this, Ruchira, and you certainly would be one of the women I'm talking about. I think that there's a real strength and a fire in Indian women, and I do believe that women in this country will deal with this situation, and most forcibly and possibly when the time comes. So I'll finish up, and if you just repeat that. वो बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हिंदुस्तानी औरतों में बहुत शक्ति है और हम लोग ये सब मुश्किलों का सामना ज़रूर करेंगे और जब समय आएगा तो हम लोग की अंदर की शक्ति को हम लोग सामने लाएंगे. What I mean is that I sense that women in this country seem to me, you know, the way every nation seems to have its own flavour of how people behave, interact, put themselves across. I think that Indian women are fiery and strong, but I think that here, as we're everywhere on the globe, women have been under the cosh of patriarchy for so long that many of us don't even see it. और वो बोल रही हैं कि हिंदुस्तानी औरतें जो हैं बहुत उनके अंदर शक्ति है और मैं भी उसी शक्ति, उन्होंने मुझ में भी वो शक्ति देखी है, तुम लोग में भी वो शक्ति देखी है, पर हम लोगों के ऊपर ये जो पुरुष प्रधान समाज है वो इतने दिन से चल रहा है कि हम लोग को समझ में, हमको याद भी नहीं रहता है कि कितना पुरुष प्रधान है ये समाज. So yeah, I do believe that we'll all get there in the end. लेकिन आंटी ने बीच में एक बात बोला था कि हम लोग खुद से चाहेंगे ना, हम लोग बहुत कुछ कर सकते. लेकिन हम भी, मेरा पति का बात सुन के हम भी तो धंधा में उतर सकते थे, लेकिन हमको अपने आप का सपोर्ट मिला, मेरा फैमिली का सपोर्ट मिला. उससे भी ज़्यादा है खुद का मन में ज़्यादा हिम्मत रखे कि हम इस जगह में नहीं पहुँच के हम इस जगह में पहुँचेंगे तो हम बहुत बड़ा इंसान बनेंगे. She says yes, it's true that you know, everything, her husband wanted to sell her into prostitution, but then she got the support of an organization like Apne Aap and of her own family, and she had to think, just like you had to think, that I'm not going to go in that direction, but I'm going to go in this direction and find that strength. I suppose to wrap it up, I would just keep uppermost in your mind to resist these the way that the men of the world want to use and abuse you, because it won't stop here. You know, there will be other situations and scenarios, may not involve prostitution, but you know what I mean. And I think that to reject shame, always reject shame. That's very important. लास्ट में वो बोल रही हैं और फिर उसके बाद कोई और सवाल नहीं करना. वो बोल रही हैं कि याद रखना कि हमारे दुनिया के जो आदमी लोग हैं वो हर समय हम लोगों का उपयोग करेंगे, कभी उपयोग करेंगे, कभी अन्याय करेंगे, कभी अत्याचार करेंगे, अलग अलग तरीके से. ज़रूरी नहीं है कि खाली वेश्यावृत्ति के जरिए, और बहुत तरीके से. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग उसका सामना करो, रेजिस्ट करो.
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चुपचाप सहो मत, सामना करो, रेजिस्ट करो, ठीक है? ओके, थैंक यू, नमस्ते।